Hi everyone. Children, today we are going to deal with median, its definition, its property and the construction of median. All these three things we are going to cover in today's lecture. So first let us come to the definition of median, children. So a line segment that joins vertex to the midpoint. So you should remember this term midpoint. Vertex to the midpoint of the opposite side is known as median. The line segment that join vertex to the midpoint, I underline this term, midpoint of opposite side is known as median. So when median comes, midpoint automatically follows. Median and midpoint, they are children. Median means immediately आपके दिमाग में midpoint आ जाना चाहिए. People generally get confused between median, altitude, angle bisector, perpendicular bisector, all these things. So median को remember करने के लिए just remember that medium, M for median, M for midpoint. In this third thing you will remember that कि median में midpoint आना ही चाहिए. So so this is the definition of a median. Now if come to this triangle, children, in triangle ABC there are three sides. Every triangle have three sides. So if there are three sides means each side have its own midpoint. So there will be three midpoint. See, if there are three midpoint, I can draw how many median? I can draw three median, children. So if there are three medians, then what median can be called as? The medians are concurrent. Why medians are called concurrent? Because the concurrent, what is the definition of concurrent lines? Whenever more than two line segments passes from a same point, more than two, 3, 4, 5 कितना भी हो सकता है, दो से ज़्यादा, if they are passing from a same point, then the lines are known as concurrent lines and the point from which they passes known as a point of concurrence. तो there are three medians, इसीलिए median को हम लोग बोलते हैं concurrent. और the point of concurrence of the median, जहाँ से तीनों median पास होती है, वो point को एक special name दिया गया है. The point of concurrence of median has been given a special name and that name is centroid. So point of concurrence of median is called as centroid. Okay, and centroid generally it is denoted by G, capital G. G stands for centroid. Fine. Now this centroid has another special property. ये centroid को और एक property दिया गया है. Now what is that special property that centroid have? Centroid का क्या property है? सेंट्रॉइड के पास ये प्रॉपर्टी, ये पावर है कि सेंट्रॉइड क्या कर सकता है, मीडियन को 2:1 का रेशियो में डिवाइड करता है. दैट इज सेंट्रॉइड डिवाइड्स द मीडियन इन द रेशियो 2:1. दैट मीन्स AG अपॉन GP इज इक्वल्स टू BG अपॉन GQ इज इक्वल टू CG अपॉन GR will be equals to 2/1. Which are the three medians for this triangle? The three medians for this triangle are segment AP, segment CR and segment BQ, and point G is centroid of the triangle. This is the point G, capital letter G. So this was something about the median, definition of median, property of median. Then we learn about the centroid and the property of centroid also we did. Now come to the construction of median. For construction, children, we need rounder, we need scale, and pencil, eraser, that is common thing. Without that we cannot do. So we will construct the triangle. First construct obtuse angle triangle. So obtuse angle triangle draw करने के लिए जैसा बताया गया है कि measurement is not given, so you can draw with any measurement. So I took scale and I am taking randomly I selected one line segment, and then I drawn this obtuse angle triangle S. In this triangle, children, obtuse angle triangle, what is special property of obtuse angle triangle? One angle is greater than 90 degree. So this is that angle, one angle is greater than 90 degree. Now next thing, children, अभी यहाँ पे क्या करना, I need to draw the obtuse angle triangle means मुझे तीनों साइड का मिड पॉइंट फाइंड आउट करना. मिड पॉइंट फाइंड आउट करने के बाद ही हम लोग
वो साइड को ऑपोजिट वर्टेक्स से ज्वाइन कर सकते हैं। तो मिड पॉइंट फाइंड आउट करने के लिए नाउ सेगमेंट स्केल लेगा, स्केल लेके अब डायरेक्टली मेजर किया, हाँ ये 9 सेंटीमीटर है तो 9 का 4.5, तो ये मिड पॉइंट हो गया एंड देन यू विल जॉइन दिस। ये भी एक मेथड है। ये मेथड कब कन्वीनियंट है, जब तुम्हारा लाइन सेगमेंट टीवी जो मेजरमेंट ऑफ ए सेगमेंट इज गिवन इन ए सिंपल नेचुरल नंबर। लेकिन अगर डेसिमल में तुम्हारा सेगमेंट्स आ रहा है, एट दैट टाइम यू कैन नॉट फाइंड, उसका हाफ वगैरह लेके नहीं कर सकता है, तो उस वक्त आप लोगों को कंस्ट्रक्शन करके ही करना पड़ेगा। सो फॉर कंस्ट्रक्टिंग चिल्ड्रन, सो लेट अस डू विथ कंस्ट्रक्शन ओनली। सो यहाँ पे हम लोगों को कंस्ट्रक्शन करना है। वी हैव टू फाइंड द मिड पॉइंट चिल्ड्रन। फॉर फाइंडिंग द मिड पॉइंट वी हैव टू कंस्ट्रक्ट अ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ सेगमेंट टीवी, perpendicular bisector of segment TV. So how to construct the perpendicular bisector? So first you will decide मुझे कौन सा साइड का मिड पॉइंट फाइंड आउट करना है, मुझे टीवी का मिड पॉइंट फाइंड आउट करना है। सो टीवी में 2 पॉइंट है, पॉइंट टी एंड पॉइंट, आई जस्ट सेलेक्टेड द एंड पॉइंट्स ऑफ सेगमेंट टीवी, टी एंड वी। So keep the pointer on point T. If you want you can keep it on V also. Now keep it on point T. Take a distance more than half. Any distance you can take more than half. ओके लेकिन ज़्यादा बड़ा भी मत लो, योर इट शुड बी एडजस्टेड इन दैट वन पर्टिकुलर पेपर। सो इसीलिए हम लोग इतना ले रहे हैं, वी आर जस्ट टेकिंग मोर देन हाफ। नाउ आई एम कीपिंग द पॉइंटर ऑन पॉइंट टी एंड देन आई एम कटिंग द आर्क ऑन आइदर साइड ऑफ टीवी। पहला टी में रखा, आई केप द पॉइंटर ऑन पॉइंट टी एंड आई एम कटिंग द आर्क ऑन आइदर साइड ऑफ टीवी। ऊपर भी कट करना है और साइड सेगमेंट कट, और उसके बाद में एट डाउन ऑल्सो किया मैंने कट। अभी डोंट चेंज द डिस्टेंस, डिस्टेंस को फिक्स रखो चिल्ड्रन। अभी यही डिस्टेंस लेके अब मैं रखने वाली हूँ पॉइंटर वी में। पहला मैंने टी में रखा था, अभी पॉइंटर को वी में रख रही हूँ। आई एम कीपिंग द पॉइंटर ऑन पॉइंट वी, आई केप्ट इट ऑन वी। नाउ कट द आर्क। कट द आर्क। ओके सो आई एम कटिंग, आई ऑलरेडी कट। देन वेयर द बोथ द आर्क इंटरसेक्ट, उसको हाईलाइट करो। ये एक पॉइंट इधर इंटरसेक्ट हुआ और एक पॉइंट इधर इंटरसेक्ट हुआ, जॉइन दिस। Now children, as I said, this perpendicular bisector is only helpful for me to find the midpoint of the segment. So I am just joining this, एक A point. So जहाँ पे perpendicular bisector is intersecting the side TV, that will be the midpoint. So to mention the midpoint, I am doing the TA or AV is equal, like this I will show. TA and AV are equal. Got it? So TA AV equal मिला। अभी now next is ये हो गया एक perpendicular bisector. Similarly draw the perpendicular bisector of other side also. So other side means now there are two sides remaining. So I selected side SV. I selected side SV. मैं SV का बनाने वाला, तो मैं क्या करूँगी, SV में I will keep the protector on point V or I can keep on S. I kept on V. I took distance more than half. And I'm cutting the arc on either side of SV. एक तो मैंने इधर कट किया और एक यहाँ पे। I cut the arc on either side, children. Now don't change the distance. Keep it on point S. And keep it on point S and then children cut it like this. जो हमने पहला आर्क कट किया तो उसके ऊपर ही exactly कट करो. Now here I can see it is not intersecting, तो फिर से उसमें जाओ, इसको थोड़ा extend करो. Fine. So here I got first point. This is the point where they intersect and this is the point here it is intersecting. Join this. Again I am using dotted line. Children, as I said, the perpendicular bisector, function for the perpendicular bisector is just to show the midpoint, nothing else. सिर्फ ये midpoint find out करने मुझे help करेगा. So this is the point where this perpendicular bisector intersects segment SV. This is the midpoint of segment SV. I am giving this name B. Denote the sign. SB will be equal to BV. This symbol show that SB congruent to BV, and this one symbol, one ditto mark shows that T segment TA congruent to segment BV. That is their midpoint. Now midpoint तो मुझे दो segment का मिला. अब मैं क्या कर रही हूँ, midpoint median, अभी median बनाना. How to find the median, children?
मीडियन का डेफिनेशन क्या है? लाइन सेगमेंट दैट जॉइन मिड पॉइंट, सो दिस इज द मिड पॉइंट टू द ऑपोजिट वर्टेक्स. इसका ऑपोजिट वर्टेक्स क्या है? एस. So line segment that join vertex to the midpoint of opposite side, the vice versa of the definition. I am joining this. So I got the first midpoint, first median मुझे मिला segment S से. Similarly draw the second one. How to draw the second one, children? What is the definition? Again I repeat the definition of median: the line segment that join vertex, this is the vertex, and the midpoint of opposite side. Which is the midpoint of opposite side? This is the midpoint of opposite side. The line segment that join vertex and the midpoint of opposite side, like this. And the point where both this median intersect, the point where both the median intersect, that will be that what it is known as the point, that point is known as centroid. तो जहाँ पे दो मीडियन इंटरसेक्ट हुआ ऑटोमेटिकली तीसरा भी उधर ही इंटरसेक्ट होगा, वो तो पक्का है. तो तीसरा मीडियन फाइंड आउट बनाने के लिए हम लोग कोई ज़्यादा मेहनत नहीं करने वाले, हम लोग फिर से परपेंडिकुलर बाइसेक्टर नहीं बनाने वाले. डायरेक्टली हम लोग क्या करने वाले? विल टेक अवर स्केल, वी विल टेक अवर स्केल, कीप दैट स्केल ऑन द वर्टेक्स वी सच ए वे दैट द अदर एंड ऑफ द स्केल इज पासिंग थ्रू द सेंट्रॉइड. सी देखो जी से मिला, क्योंकि जहाँ से मेरा दो मीडियन पास हो वहीं पे मेरा तीसरा मीडियन भी पास होगा. तो यहाँ पे स्टॉप नहीं करना है, एक्सटेंड. कब तक एक्सटेंड करेगा? जब तक वो सामने वाला साइड में पास नहीं, सामने वाला साइड को टच नहीं करेगा. जैसा टच हो गया स्टॉप इट. सो दिस विल बी योर थर्ड वन सेगमेंट. तो ये पॉइंट सी इसका मिड पॉइंट होगा. पॉइंट सी विल बी द मिड पॉइंट. तो शो दैट डिटो मार्क. दिस डिटो मार्क shows that the segment are that C is here. See here this symbol shows that here one ditto mark means point A is midpoint. Here 2 means point B is midpoint. Here 3. So point C is midpoint of segment ST. So children, in this way you are supposed to construct the median and the point G is centroid. So which how many medians we drawn, children? How many medians are here? So the medians we drawn here, the total medians are: first median segment SA, second median segment BT, third median segment CV. And which is the centroid? Centroid is point G. What special property centroid shows? The special property that centroid apply over here is centroid divide each median in the ratio 2:1. मतलब SG upon GA is the first ratio of the first median. सेकेंड वाला क्या है? BT का कैसा होएगा? TG GT upon BG. And third one it will be VG upon GC is equal to 2/1. This is the property of centroid, children. Very much clear? So this is the way you are supposed to construct the median in a triangle. Thank you, children.